हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे समर सीज़न। ये ऐसे मैं 200 वर्ड्स के साथ शेयर करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। समर सीज़न इज़ द हॉटेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। द समर सीज़न स्टार्ट इन मार्च एंड एंड्स इन जुलाई. During summer season, days are longer and nights are shorter. In summer season, the sun shines brightly and rises early in the morning. In this season, the temperature becomes so high. The days are so hot that people do not want to go outside. The days are hot that people sit under the fans before the coolers or in AC. In the village, the people sit under trees. Many people no come out of this season due to heat of sun. The children like to bath for a longer time. They play in water and get some relief. Soon they are sweating again. In summer season, people leave to visit cold places and hill stations. There are variety of fruits and vegetables in this season. Many beautiful flowers bloom in this season. During the season, rivers, ponds, and lakes get dry due to extremely hot weather. People and animals feel very thirsty in this season. There are many positive really benefits of this season. The warm air helps in the proper blood circulation. Summer season is good for farmers because it brings clouds for rainy season. अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।